Back at Macbeth Castle, Macbeth and Lady Macbeth put on a lavish banquet for their guest. One of the killers quietly informs Macbeth that they have killed Banquo, but his son Flynn still alive. Macbeth talks to the ghost of Banquo, which makes him appear mad to the guest. Lady Macbeth then asks the guest to leave. At that time, she actually is in her senses, but later on, she proves, you can say, a weaker character. After the botched banquet, Macbeth tells Lady Macbeth that he does not trust Macduff since he did not attend the banquet. First suspicion was on Banquo and his son. Second is on Macduff because Macduff did not attend his banquet. By the way, Macduff is the character who knocked at the gate when King Duncan was murdered. He thinks that Macbeth claims that he will go to witches to try to learn more. Lady Macbeth at that time, Lady Macbeth at that time expresses her concern that Macbeth does not get sleep anymore. You can recall uh, his superstition or his preoccupation that Macbeth will sleep no more because he has murdered a sleeping man. On the heath, the head witch Hike tells the three witches they should not have given information to Macbeth. First time, three witches actually met Macbeth. This time, they will meet Macbeth in the command of Hake, a supreme witch, we can say. She is a Greek mythical character. She tells them to be ready to meet Macbeth tomorrow. So Macbeth goes to consult witches. On the other side, at Macbeth's castle, Thane of Lennox discusses the murders with another lord. So two lords, two Thanes are talking about why the people are being killed in this kingdom. They hint that they think Macbeth is at the core of all the deaths. They comment that Macduff has gone to England, perhaps to meet up with Prince Malcolm and to ask King Edward the Confessor for help. King Edward was at that time King of England. In a cavern, the three witches make an evil brew in cauldron. Macbeth enters and asks the witches for advice. First time the meeting was a coincidence, but that meeting was planned meeting. That's why the Christian reader of that play, they believe that that's the moment when Macbeth willingly approaches witches and he is ready to be their party, sell his soul. At that time, actually, he is going to be a damned soul. The first spirit, actually, witches have bring up three spirits, and the first spirit wants him to be wary of Macduff. पहली विच जो है उसे खबरदार करती है कि मैकडफ से खबरदार हो. वो कहता है ठीक है अगर मैकडफ कोई खतरा है तो उसे खत्म कर लेंगे. Second tells Macbeth that none of woman born can harm him. Second spirits, second witch tell that none of woman born can harm him. He cannot be killed by a person who is born out of womb. Macbeth thinks that every human being is born out of womb of a mother. Here, very important point about prophecy is prophecies are about particular, but
in generalized way. And receiver of prophecy must concentrate on particular thing. But here, Macbeth, the receiver of prophecy, applies it in general way. एक्सेप्ट रूल पे नहीं जाना था, एक्सेप्शन पे जाना था, और उसने रूल को समझा कि तमाम इंसान तो माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं, तो ये क्या बात हुई? इसका मतलब नो ह्यूमन बीइंग कैन किल हिम. द थर्ड spirit tells him that he will be safe unless Burnham Wood walks to Dunsin and Hill. Even he couldn't come out of the spell of the second thought. अभी वो second thought से बाहर नहीं निकला कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो कि माँ की कोख से पैदा हुआ. तो उसके ज़हन में आया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इमॉर्टल हूँ, मुझे तो कोई मारेगा ही नहीं, और अगर मारेगा नहीं तो फिर मैं एक क्या कह सकते हैं कि तबई मौत तो मर सकता हूँ, लेकिन किसी कोई मेरा मर्डर तो नहीं करेगा, इसलिए मैं जब तक चाहूँ मैं किंग रह सकता. लेकिन यहाँ उसको एक और इम्पॉसिबल ऑप्शन नजर आता है. बर्नम वुड वॉक्स टू डेंसिन एंड हिल. द वर्ड वॉक is interpreted by Macbeth as very like a walk of human beings or animals. वो समझता है कि वॉक का मतलब टांगों पे चल के जाना होता है, तो जैसे इंसान टांगों पे चलते हैं, इसी तरह ट्रीज, तो ट्रीज की तो टांगे ही नहीं है, तो वो कैसे जो है वो चल के इंसानों की तरह डंसिन एंड हिल पर पहुंचेगा. अगेन फोकस वाज ही शुड think about its exclusive or special happening, but he didn't bother. At that time, he thinks that Burnham Wood can never walk to Dunsin and Hill, so his rule is eternal. मैकबथ इज रिलीव. जितनी टेंशन लेके मैकबथ यहाँ विचिस के पास आया था सारी खत्म हो गई. बस अब ये था कि विचिस ने कहा है तो सच ही कहा होगा, और वो था कि मैकडफ का ख्याल रखना, मैकडफ से खबरदार रहे. तो शुरू में first at the time of first prophecy he was skeptic. At the time of second prophecy he was believer of witches words, so he is ready to kill another man for the sake of that prophecy, and that man is Macbeth. Macbeth asks if Banquo's son will be kings. The witches produce a vision of 8 kings followed by Banquo's ghost. मैकबथ के जेन में तो यही क्वेश्चन था कि मैं इतनी एफर्ट करूं, बाद में बैंको का बेटा बादशाह बन जाए. एंड ऑन दैट यू कैन से द विचेस रिमेन साइलेंट. दे ओनली शो हिम अ विजन, एंड इन दैट विजन देयर आर 8 किंग्स फॉलोड बाय बैंकोस घोस्ट. तो इसका मतलब ये था कि बैंको तो मर गया, लेकिन उसकी 8 नस्लें शायद बादशाह बनी. Who is ghost is smiling and indicating that kings are all his eye. The witches go away, but Macbeth doesn't bother it because of the two ideas. None of woman born can harm him, and he will remain king unless Burnham Wood walks to Dunsinane Hill. At that moment, Lennox arrives and informs Macbeth of Macduff's desertion. He tells him that Macduff is no more with him. For punishment, Macbeth declares he will kill all of Macduff's family and plunder his home and possession. He thinks that's a fine way. मैं तो खुद ये करने ही वाला था, अच्छा मौका आ गया, पता चला कि ये बंदा जो है वो ट्रेटर है, तो ट्रेटर क्यों इस तरह से पेनलाइज करे कि plunder his home and possessions and kill all of Macduff's family. Thane of Rose goes to Macduff Castle to tell Lady Macduff that her husband is in England. Lady Macduff is afraid and wonders if her children will be safe. She tells her son that his father is dead. Macduff is alive, but she is thinking about that. That's so risky, so dangerous. But the boy knows that she is not telling the truth. Lady Macduff receives a warning of danger, but it is too late.
Macbeth's hired killer killed Lady Macbeth and her son. So first they killed Banquo, now they killed Macbeth's son and wife. In England, Prince Malcolm and Macbeth discussed the problem in Scotland. क्योंकि मैक्टब जो है वो स्कॉटलैंड से भाग के इंग्लैंड चला गया है और वहां जाके उसने सक्सेसर टू थ्रोन मेलकम से बात की है और उसे बताया कि वहां तो स्कॉटलैंड में इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं, लिहाजा उसे वापस आके किंग बनना चाहिए. टू टेस्ट मैक्टफ लॉयल्टी, मेलकम ट्राइज टू कन्विंस मैक्टफ दैट ही डज नॉट फील qualified to lead Scotland. Macduff mourns for Scotland and Malcolm tells him of his determination to take the crown. Actually, they were talking about the possibility whether Malcolm can invade or not. Malcolm is reluctant. One reason is he thinks that the people are with Macbeth. Second reason is that he thinks that King of England, King Edward the Confessor, will not support his initiative and will not give him soldiers. So, but Macduff provokes him the very moment Thane of Ross arrives and tells them that Macduff family has been killed. That's the news which is conveyed. Macduff and Malcolm know both are ready to go and take revenge and also penalize Macbeth. They prepare an army to return to Scotland and take revenge on Macbeth. In Macbeth's castle, Lady Macbeth has been in habit of washing her hands again and again. She is victim of sleep sickness. Both husband and wife actually are victim of sleep sickness, and she has developed the habit of walk in sleep. In Macbeth's castle, Lady Macbeth, doctor or physician character, uh, tells uh, Lady Macbeth's mental stability. They see Lady Macbeth enter the room walking and talking in her sleep. She makes movement as though she is washing her hands and becomes upset because she cannot make them clean of blood. She returns to her bedroom and the doctor tells the lady in waiting that he cannot help Lady Macbeth recover her sanity. Actually, uh, a physician has realized that there is some issue of conscience. Her conscience is pricking. She has a burden of conscience and she cannot carry it. And he realizes that uh, uh, he reports that once she shown him, you can say, a dug soil that they buried the king here. No, a physician believes that she needs some therapy or spiritual treatment. On a field near Dunsinane, sorry, Menteith, Angus, and Caithness rebels against Macbeth. Once they were with Macbeth, but now they are with future king Malcolm. They discussed with Lennox the rumors that Macbeth is insane. Why he is insane? Because he has talked to ghost of Banquo and he does not sleep. They are happy that Malcolm, Macduff, and Seawards are planning to assemble at Burnham Wood to fight against Macbeth. So they have come, they have reached Dunsinane Hill, and they are using Burnham Wood as a shield. Macbeth puts his confidence in the professors of witches when he hears of the advance of Malcolm's army. मैकबथ को पता चल जाता है, मैसेंजर आके बता देता है कि एक फौज आ रही है. वो कहता है क्या बिगाड़ लेंगे मेरा. वही दो चीजें. He cannot be killed except by a man who is not born out of womb. And second,
He will remain king unless Burnham Wood walks to Dunsinane. He thinks that since Burnham Wood cannot come to Dunsinane, and since Malcolm is the born of a woman, he is safe. He is upset that the doctor cannot heal Lady Macbeth, and Macbeth is going to ready for final battle with Malcolm. Malcolm's soldiers are ordered to cut a branch from a tree in Burnham Wood in order to camouflage themselves as they advance on Macbeth's castle at Dunsinane, where Macbeth has set up his defense. मैकबथ ने अपनी तरफ से बड़ा बचाव किया था, एक पहाड़ पर जो है अपना कासल बनाया हुआ ताकि कोई उसकी तरफ ना पहुंच सके. But they used Burnham wood as shield. So you can say the people around cannot take notice whether these are the horses and the men they are advancing to castle or these are trees. Macbeth boasts that there is no evil that makes him pause. Then Satan, Macbeth's servant, tells Macbeth that Lady Macbeth has committed suicide. This news causes Macbeth to comment that life is empty, a brief candle and a walking chair. That you can say extract is very much significant. I believe I should stop a minute here and share the textual content at that moment.
Okay, that's a speech of Macbeth when Satan reports the news of his wife death. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pretty pace from day to day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted full the way to dusty death. Out, out, brief candle. Out, out, brief candle. That's about, you can say, a short span of life. Life's but a walking shadow. Highly significant line. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his art upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Between the line, ideas of absurdity of life or meaninglessness of life, that is the crux of existentialist and absurdist literature that can be seen here. Sound and Fury, that's the title of William Faulkner's novel, great American novelist, and a recurrent reference to Brief Candle, Walking Shadow, a tale of a tale told by an idiot signifying nothing. So that's, you can say, the lesson which an ambitious man actually at the end realizes. A messenger, a messenger arrives telling the news of a moving grove of trees advancing on the castle at Dunsink. So first thing to break Macbeth was news of Lady Macbeth's death, and second is the news of a moving grove of trees, and these trees are Burnham wood. Moving grove of Burnham wood advancing to Dunsink. Macbeth realizes that the spirit's prophecy is coming true, but says he is prepared to die. He still believes that third prophecy can save him. That is, a man who is not born out of whom will kill him. There is a fight, army of army led by Malcolm and General Seward and Macduff. They enter castle, kill Macduff loyals and men, and Macbeth is ready to face them. As Malcolm army advances, Macbeth fights hand to hand combat. That is the grandeur of a hero, not of a villain. Macbeth kills Seward's son in battle. General Seward Senior, he loses his son in that fight. Seward and Macduff seek out Macbeth and engage him in a fight. Both of them have grudge against him. Rather, three of them. Malcolm, father killed by Macbeth. General Seward's son, Seward Jr., killed by Macbeth. Lady Macduff and Macduff's son have been killed by Macbeth. So Macbeth announces that he is invincible because he cannot be killed by anyone born of a woman. At that moment, Macduff counters him that he was removed from his mother's womb by a surgeon and therefore was not born of woman. Caesarean like birth. That was his birth. He was not naturally born child. Macbeth realizes the witches have doomed him with their prophecies and spirits. He does not surrender even then. ये आखिरी मौका था मैकबथ को तोड़ने का
कि मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि सब कुछ जो होना है हो जाए, बट मैकबेथ acts like a hero and doesn't surrender and commits suicide but keeps on fighting. Macduff kills Macbeth and brings Macbeth's head to Malcolm, proclaiming Malcolm King of Scotland. Malcolm announces that all his supporters will be made earls in thanks for their assistance in the defeat of Macbeth. He restores peace and order in his kingdom. So that's the play uh, Macbeth. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने शायद हैंड रेज किया था तो मैंने उनको बात नहीं सुन सका, तो पहले एक बार, लेकिन अब कोई भी ऐसा जो है वो नजर नहीं आ रहा। एनी, इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड एंड आस्क मी। यस सिराज प्लीज। यस हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें कि प्रिडिकेशंस या प्रोफेसीज जो हैमलेट को पता भी था कि ही वाज कंप्लीटली नोइंग कि इट विल हैपन, द प्रोफेसीज व्हिच वाज गिवन बाय विचेस, इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज नॉट बिलीविंग। क्यों? व्हाई ही वाज नॉट बिलीविंग? किस वजह से ही बिलीव नहीं कर रहा था? क्योंकि पहली प्रिडिकेशन या प्रोफेसीज तो एक्सेप्ट हो चुकी थी, उसको किंगशिप मिल चुकी थी, उसके बावजूद देन ही वाज ईगर टू बिकम a king. Why? Sorry, I could not understand your question. Actually, before first prophecy he was skeptic, but after prophecy and you can say coming into power, he becomes a believer. He thinks that whatever is prophecy, it will be true. Actual issue is interpretation of prophecy. उसके ख्याल में प्रोफेसी का मतलब क्या था? प्रोफेसी पर तो उसे 100% यकीन था। वो यकीन करता है कि उसे कोई ऐसा शख्स कत्ल नहीं करेगा जिसने माँ की कोख से जन्म लिया। वो यकीन करता है कि वो तब तक किंग रहेगा जब तक बर्नम वुड जो है वो डंसिनर हिल पर नहीं पहुंचे। वो यकीन रखता है कि मैकडफ कोई छोटा मोटा ही सही, कोई ना किसी ना किसी टाइप का कोई उसके लिए डेंजर बन सकता है, लिहाजा मैकडफ को खत्म करना जरूरी है। तो तीनों तीनों हवाले से उसकी प्रोफेसी पर पूरा उसका यकीन होता है। ये नहीं है कि वो प्रोफेसी पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी सेंस डिफरेंट है। इंटेंशन ऑफ प्रोफेसी गिवर, आई मीन विच इज, that was different, and you can say understanding of Macbeth, that was different, but he didn't have any doubt at all. Doubt उसे नहीं होता, वो तो realize करता है एंड पे जाके what they actually meant. जी हेलो, is it clear or you want to say something? Samra, yes please. सर ये जो प्रोफेसीज थी जो विचेस ने की हैं, वो मैकबेथ की वॉइस ऑफ डिजायर थी या वॉइस ऑफ गॉड थी? I think that's first prophecy is the Macbeth, you can say, desire. Clear? Second prophecy is actually a trap for, you can say, Macbeth. Here Macbeth question was simple, and question was
will Banquo's son be king or not? But unwantedly, he was given three more prophecies. And about his question, there was no prophecy in word. That was just a vision in which eight kings were shown, followed by Banquo's ghost. तो उसका जो सवाल था वो ट्रिकी तरीके से जवाब दिया गया. सो दैट वाज अ ट्रैप. Definitely, second prophecy can be equal to fate of Macbeth. So, if fate is ordained by God, we can say that's the voice of God, but that's a far-fetched, you can say, stretching the things. Otherwise, second prophecy is a trap, and first prophecy is actually reflection of Macbeth's own desire to be a king. G. Anyone else? Yes, Kinza, you raised hand, but I'm not seeing your name. Yes, please, Kinza. सर पेपर्स का पैटर्न पूछना था कि वो ऑनलाइन होंगे या फिजिकली. आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है ऐसा है डिपार्टमेंट की तरफ कि मुझे जो अभी तक इंटीमेट किया गया कि कल जो है ना उस हवाले से मीटिंग होगी अभी मंडे को, और उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा या क्या उसका मोड होगा, तो फिर पैटर्न क्या होगा. जो पुराना पैटर्न है वो तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है. तो जो भी इंटीमेट नई अपडेट आएगी वो मैं आपको जो है शेयर करूँ. अभी मेरे पास किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है. ओके सर. जी उस्मा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर क्या हमें इसके कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता सकते हैं आपके किस तरह से होंगे? जी मैं बता रहा हूँ. जी थैंक यू सर. Siraj, you want to say something? Hello? Ali? जी सर, जी सर. जी please. सर डेट वगैरह मेंशन नहीं हो रही सीएम. एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं. एग्जाम के हवाले से कल जो है वो डिसाइड किया जाएगा. सर नहीं सर, नहीं सर, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशंस के हवाले से कुछ. जी असाइनमेंट के हवाले से वो मैंने चेक किया था तो 20 दिसंबर था, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया. जी सर, जी सर. फैसल फर्स्ट अली. यस अली ने. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी. Sir, I want to ask, will you please share the material that you have listed the questions of every drama that we have discussed, from where we can prepare the material? If you have, then please sir, share us. फैसल, you want to say something? यस सर, आई वांट टू से सर मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप की थी. मैं बेसिकली उसको अपलोड करना चाह रहा था. ये एब्स्ट्रैक्ट की थी वो भी जी जी. टर्म पेपर मेरा इट इज अबाउट टू कंप्लीट, लेकिन वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया था और मैं उसको सबमिट करवाना चाह रहा था सीएमएस के ऊपर. तो सीएमएस के ऊपर मैम अस्मा को तो आ रहा था असाइनमेंट का ऑप्शन और वहां पे मैंने सबमिट भी करवा दी.
लेकिन आपका नहीं आ रहा था। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और फिर मैंने सीएमएस में ईमेल भी भेजी थी, लेकिन अभी तक वो 0 ही आ रहा है। वहाँ पे मैं सबमिट करवाना चाह रहा था अपना एब्स्ट्रैक्ट। उसमें ये है कि जो आईटी के रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए सपोर्ट आईटी एक ईमेल है, बिल्कुल support@it.mtl. सर, वो मेरे पास है। जी मैंने वहाँ पे जी ईमेल छोड़ा था, मैंने ठीक है। उनको हर एक तो चीज़ ये से है कि बाखबर किया। अगर आपने उनको ईमेल कर दी थी तो आप इस हवाले से परेशान ना हो, मैं यकीनन आपके जो उसका मार्क्स बनते हैं वो आपको अवॉर्ड करूँगा। दूसरा ये है कि थैंक यू सर। मैं अपनी तरफ से दोबारा जो है वो चेक करता हूँ कि कहीं मेरी तरफ से कोई इशू तो नहीं है, चूंकि पहले ऐसा वैसे जी कभी हुआ नहीं ठीक है है। कि हमने कुछ अपलोड किया हो तो वो स्टूडेंट तक कन्वे ना हुआ हो। तो इस दफा कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे नहीं हैं। सर, आपने जो प्रीवियस चीज़ें वहाँ पे अपलोड की हुई हैं, जैसा कि आपने टेक्स्ट वगैरह और इसके अलावा कंटेंट सोर्स में आपने कुछ स्लाइड्स वगैरह रखी हुई हैं, वो हम्म, मैं रिसीव हुई हैं। वो मैंने वहाँ से ही डाउनलोड की हैं और मेरे पास वो मटेरियल है जिसके बारे में अली कह रहे हैं। जी तो वो मटेरियल जो आपने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के बारे में अपलोड किया है स्लाइड्स की शक्ल में या और मुख्तलिफ सोर्सेज, तो वो वहाँ से मुझे रिसीव हुए हैं। मैंने उनको डाउनलोड किया है वहाँ से ही, लेकिन ये असाइनमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं इसको चेक करके फिर दोबारा जो है आपको कुछ रिस्पॉन्ड करता हूँ, और अगर ना हुआ तो सर फिर मैं ईमेल एक्सेप्ट सॉरी करूँगा। बात जी उसमें सर बिल्कुल सीएमएस का मेरे साथ भी यही इशू है कि लॉगिन नहीं हो रहा, और ईमेल भी की हुई है और कॉल भी कोई आसिफ साहब हैं उनको करते हैं, बट उसका कोई मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो यही इशू मुझे भी फेस करना पड़ रहा है, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपलोड करने में नहीं, बाकी में भी यही इशू है। तो क्या मैं भी आपको डायरेक्ट ईमेल कर सकती हूँ क्या? जी डेफिनेटली, अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते ओके सर, हैं। जी थैंक यू। अली का जो क्वेश्चन था वो असल में पूरी क्लास के लिए मैं कुछ पॉइंट सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि आप को मैंने टॉपिक्स बताए हैं, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो पेपर में सिर्फ आपको जो है वो पता चलेगी कि वो क्या है। ठीक है, आपने